Article 24. Article 24. What is Article 24? It is very simple. It says that children are prohibited from employed in hazardous activities like factories, mining, etc. To put it simply, what we are trying to do, we essentially would want to prohibit child labor. That is what the idea is. In this regard, the first thing that should come to your mind is, ki, sir, why is it that we are having a separate article called Article 24 for it? Article 23 mein we are talking about human exploitation is not allowed. One can argue you can keep exploitation of children to be a subpart of Article 23. Why exactly we need it as a separate article? There was a thinking behind it. What was the thinking? See, at the time of independence, at the time of Constituent Assembly, there were a number of people who were not very sure that we should be having, or should we not be having what is called as universal adult franchise. For example, Subhash Chandra Bose, he was not a member of Constituent Assembly, but he had said it on multiple occasions that right after independence, India should not become a complete democracy. India should become something like a state-controlled country, a democracy, a partial democracy, with very limited number of people having right to vote, and only one party, let's say Indian National Congress, running it for the next 20, 30 years. Why exactly is that the case? The reason is because the very idea of you being a person who can right to vote is a lot of responsibility. The idea is you could be a person who might be PhD in political science, you could be a person who might be a very big scientist, or you could be a person who is absolutely ignorant about issues of the country. In this regard, value of every person is same when it comes to voting in universal adult franchise. आप हजार चीज सोच के वोट दोगे, well, I'm going to look at this, I'm going to look at their background, I'm going to look at their performance, I'm going to look at their GDP, and then you'll go and vote. And they can be a person जिसने 250 ml दे दिया, उसने उसको वोट दे दिया. In this regard, what is happening is that the chance of political discourse to essentially get ruined, get corrupted is very easy for the country where people essentially have not been democratized. समझ में नहीं है? You essentially will need to understand what exactly democracy means. Otherwise, we might end up having caste-based politics, communal politics, region-based politics, cash for the votes, वगैरह वगैरह चीजें. In this regard, what is the basic minimum that is required? Basic minimum is people being educated. In this regard, education level of India at the time of independence was very low. In fact, people who were even literate were less than 20% literate. मतलब your ability to read and write. You're not at all talking about your ability to do critical thinking. In this aspect, what exactly happened? How exactly can we actually have a country which is working on universal adult franchise? But Nehru, Sardar Patel, Munshi Saab, they all were very clear that at the heart of having people to be a part of freedom struggle was the fact that we are going to have equality, we are going to have democracy, and it cannot happen until unless we are now delivering one person, one vote, that is universal adult franchise. So by and large, there was consensus, ठीक है, we are not going to have what? Partial democracy, we are going to have universal adult franchise, ठीक है. But the point is, we actually will need to work towards making the society more democratized. हम चाहेंगे हमारा समाज और डेमोक्रेटाइज्ड बने. डेमोक्रेटाइज आगे बनाने के लिए आज के बच्चों को टारगेट करना पड़ेगा हमें. We essentially will need to ensure the fact that the children of today are actually getting democratized over next 10, 15, 20 years. बात ठीक है? In this regard, what exactly was the barrier or what exactly is required for it? Two things. Number one, right to education. वो हम दे नहीं सकते. For the reason we cannot guarantee it as a fundamental right in 1950. And the second thing is we will need to make sure that children are not getting exploited in their youth. आपको पता है one of the biggest factor why China essentially is able to manufacture things, mainly electronic equipments at a very low cost, because they employ children. Children have very small fingers. So things that you essentially will need to get done by very precise machines, they are able to get it done by children. बात समझ में आ रही है? In this regard, what they are doing is they're exploiting children, to put it very simply. In this regard, the same can happen in India. The same was happening in India. आज तक देखो अभी आप child employment तो आपको देखते हैं. In this regard, what was the idea? The idea is we will need to create a fundamental right for children where we are able to what? Stop exploitation of children. Children should not be employed in any kind of work so that these children are going to school. Now, logically, you should also give right to education. That time we thought we will subsequently give it in the future. But अभी के लिए इतना कर सकते हैं that we essentially cannot allow children to engage in any kind of labor. यहाँ तक ठीक है? Fine.
ठीक है, इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या है? थिंक अबाउट इट। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। So if at all you're telling to a couple कि भैया do not send your child to any kind of work, right? वर्क के लिए मत भेजो। इन दिस रिगार्ड ये वर्क के लिए भेज ही क्यों रहे पेरेंट्स? Because this child is going to get some money. That means what you're saying is you should not get this child this money. In this regard, why exactly they need this money? So that the child is able to get the food. बात समझ में नहीं आ रही? If at all you're saying that, well, we do not want you to send your child to work. In this regard, basically we need to understand the child so far was going to work so that he can earn some money, and that money is required for him to get food. Now that we are saying this is prohibited, it means state should provide this food for the child. As simple as that. कोई मर्जी से थोड़ी बेचता है अपने बच्चे को, इसीलिए बेचता है, मजबूरी। अगर मजबूरी है, नाउ यू एसेंशियली शुड प्रोवाइड दिस फूड टू चाइल्ड। ये कहाँ से दे? नहीं समझ में। 1950, 1947, 48, 49, we essentially were what? No, I mean, lakhs of people used to die almost every year because of famine. We were not having food security. In this regard, how exactly will we be able to deliver this promise? As such, we said that, well, we have to be very smart about it. We have to be very intelligent about it. And we said exploitation of children is prohibited. Child employment is prohibited in hazardous activities. In hazardous activities. That means in non-hazardous activities, it is allowed. I hope you understand the point. That is what they essentially wanted to establish because of this challenge. जो पूरा एक महीने का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट था वो मैंने आपको समझाया 5 मिनट में. The point is, this is something that they had to do for the reason there was no other way. As such, what exactly was the idea? They said that there's something called as hazardous activities. Hazardous activities. In this regard, hazardous activities में constitution is saying there is mining, there is factories. You essentially cannot have people or children under 14 years to be employed in factories or mining. This is something that is not allowed by Article 24. That means you essentially have other set of things that are not a part of this box. Their children can be employed. In the Constituent Assembly, it was also discussed over the period of time 50, 55, 60, 65, 70, ऐसे करते करते we will keep on identifying other hazardous activities and we will keep them putting them in this basket. हम लोग laws बनाते रहेंगे. Let's say children will not be allowed to work in dhabas, children will not be allowed to work in malls. ऐसे करके we essentially will keep on making laws by which we are able to keep it in this category. In other words, the right way to approach Article 24 and to see whether it has been a success or not, कि सारी ही एक्टिविटीज हजार्डस हो चुकी है ताकि बच्चों को आज काम करने की जरूरत ही नहीं. बात समझ में नहीं है? इस इंटेंट से ये बनाया गया था. Anyone not able to understand this point? ठीक है. Subsequently क्या हुआ? That was not really the focus area of the government. As I said, पूरा मैंने आपको बताया था 50s, 60s, 70s में, mainly from 60s because of Indo-China war, Indo-Pak war, because of political instability. 70s में because of emergency, again political instability. Then 80s में again Sikh riots, assassination of Indira Gandhi, Bofors scandal. You actually had what? Somewhere people were not really focusing about what can be done for children. यहाँ तक समझ में नहीं? What exactly can we do with respect to this thing? यहाँ तक समझ में?
By the time we get to 90s, what exactly had happened? We essentially were having only regional parties, regional issues. Caste based politics हो रही है. मैं इस कास्ट का हूं तो वोट दो, मैं उस कास्ट का हूं तो वोट दो. Again, people are not talking about their children. Then came in, as I said, Atal Bihari Vajpayee. उनके core agenda था वाजपेयी साहब का that we essentially will need to do something by which we are able to हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ टुडे. तो उन्होंने बहुत मैसिव स्केल पे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह स्टेट के साथ पार्टनरशिप करके किया था, बाय व्हिच वी एसेंशियली एबल टू रिफॉर्म दिस लॉस को बेटर बना सकते हैं. यहाँ तक समझ में नहीं आता? ठीक है. इस दौरान मतलब 1987 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया. सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया ये समझते हैं. 87 में बेसिकली सवाल कोर्ट के पास क्या आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कोर्ट के पास सवाल ये आ रहा है दैट सर वी बिलीव एनी एक्टिविटी working in mall, let's say, to be an hazardous activity, or working as a gardener as hazardous activity, working as a domestic help as hazardous activity. अब कोर्ट के लिए कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है that yes, constitution says that hazardous activities में children cannot be allowed, and factories and mining में तो कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. So Supreme Court will not allow it. But the point is, what else apart from factories and mining is hazardous activities? ये कैसे डिटरमाइन करे? In this regard, people are coming to court because we believe it to be hazardous. But Supreme Court can say that, well, this is the job of legislature to decide. जैसे मैंने बताया, apart from factories and mining, it should be the job of legislature to decide किसको आप लोग hazardous मानते हो. At the same time, people are trying to protect their fundamental right. छोटी बात थोड़ी है. Article 24 तो fundamental right है. In this regard, Supreme Court needed a way by which they can create a criteria on which court can identify something to be hazardous or not. बात समझ में नहीं है. कोर्ट को कोई एक तरीका बताना पड़ेगा जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए इन एक्टिविटीज के अलावा कोई एक्टिविटी आती है उसको हजार्डस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा. और and the idea is that this criteria should be based on something that is given in the constitution, for the very simple reason legislature or judiciary is not in the business of making laws. They are in the business of interpreting constitution as per what is written in the constitution. बात ठीक है? ठीक है. Keeping that in mind, Supreme Court said, देखो, whenever we essentially are going to have any question with respect to Article 24, that is, with respect to any activity being hazardous or not, any type of employment in which children are engaged in hazardous or not, we essentially are going to look at that nature of employment. For example, working in malls or working as domestic labor, for example. And we essentially will compare it with what is written in Article 39E and Article 39F. हम लोग इन दो आर्टिकल्स को देखेंगे. 39E and 39F are articles that are given in DPSPs, Directive Principle of State Policies. In this regard, what exactly it says, 39E and 39F, ये कहते हैं that state should keep on making policies where children are not being forced to do any work which is not suitable for their age, and opportunity should be created for children in a manner by which they are able to enjoy their youth. 39E and 39F क्या कहता है कि कोई भी इस तरह का बच्चों को काम ना करना पड़े बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन जो उनकी एज के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसी पॉलिसी स्टेट आप बनाते रहिए. एंड 39 है कि बच्चे अपना यूथ एंजॉय कर पाए, चाइल्डहुड एंजॉय कर पाए, इसकी पॉलिसी से बनाते रहिए. इन दिस रिगार्ड व्हाट एग्जैक्टली कोर्ट सेड, इफ एट ऑल वी फाइंड वैक्यूम ऑफ लॉ जो इस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा फॉर द रीजन बच्चे इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, वी विल stop that activity as well. जिसको नहीं समझ में आ रहा जो मैं कह रहा हूँ. आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक दैट दे आर गोइंग टू. चिल्ड्रन को वहां जाने का स्टॉप तो स्टेट करेगा, मतलब पुलिस करेगी. पहले तो ये बताना पड़ेगा ना एक्टिविटी अलाउड है नहीं अलाउड है. आई होप यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. तो कोर्ट ने ये बोला दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू लुक एट क्वेश्चंस ऑफ आर्टिकल 24 in its interpretation, Article 39E, 39F, which are part of DPSP, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, that will be the basis of interpretation. समझ में नहीं है? हम खुद से नहीं बता रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वही है basis of interpretation. Keeping that in mind, Supreme Court also identified working in construction sites to be an hazardous activity. Working in construction sites to be an hazardous activity. किसको नहीं समझ में आता? That means now
So the idea is what is written in constitution, mining and factories. So it is beyond doubt ये तो allowed नहीं है. What is also written, hazardous activities like factories, mining, etc. Now the question is what is etc. In this regard, Supreme Court can interpret what exactly Supreme Court said. Yes, we can, but we essentially will look into any activity that you're bringing to a notice. For example, let's say children cleaning toilets, for sake of example. In this regard, we will look at, is it something which is in line with Article 39E or 39F or not? This will be the basis of our interpretation. Can it be accepted or not accepted as hazardous? That is what court is saying. Ultimately, it is for court to decide. But what is the basis of interpretation? This is. If legislature comes into picture, that is the best thing that can happen. Because legislature is not coming in the picture, is why court has to intervene. Are you getting the point? Something, for example, Supreme Court identified working in construction site is hazardous. Why exactly Supreme Court had to say it? Isn't it obvious? It isn't something that legislature should have made a law right after independence itself, right after 1950 itself. Because we saw for good 30-35 years, legislature was not being serious with respect to taking, identifying that is these employment and categorizing them as hazardous activities. Why we saw this problem occurring? Is it clear? Pakka? Right. Construction site आ गया. Then, as I said, by 96-97 when Vajpayee government came, actively they started adding things in hazardous activity. बहुत सारे laws बने child protection के, and they essentially were trying to identify activities that now intelligently we can categorize as hazardous activities by making laws. बहुत अच्छा काम चल रहा था. Then came in Manmohan Singh government. They also continued the same work. Interestingly, by 2014 onwards, what exactly happened? We actually saw चीजें बाहर निकाली जा रही थी. Right? You essentially saw what? We essentially were diluting laws with respect to child protection. What exactly was the reason why they had said it? समझना. The argument that government was giving that for last 10 years, 14 years, whatever, we essentially have added number of things in this activity, and more often than not, we are having evidence it is getting abused. For example, let's say जैसे अगर आपने देखा है इंडिया में जो एस जी बॉल होती है, बॉल जानते हो, क्रिकेट बॉल, तो एस जी बॉल जानते हो, इंडिया के मतलब वर्ल्ड रिनोन बॉल है. एस जी बॉल इज मेड बाय हैंड, हाथ से बनाई जाती है. अगर आप जानते हो तो देखना वीडियो डॉक्यूमेंट्री, एक्सीलेंट डॉक्यूमेंट्री उस पर. तो जो एस जी बॉल होता है इसमें देयर इज एन आर्टिस्ट्री दैट इज इन्वॉल्व. आर्टिस्ट्री मीन्स कला, राइट. इन दिस रिगार्ड व्हाट हैपेंस इज जो कारीगर होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं ये कैसे होता है बेटा, वैसे कैसे धागा जाना है, कितना वेट मैनेज करना है. In this regard, if you think about it, it can be looked upon as if they essentially are engaging their children in child employment. But actually, that is not the case, right? I hope you understand the point. अगर आप सोनार देखो, वो अपने बच्चों को सिखाता है how exactly you're supposed to identify कैसा सोना है, क्या है, how exactly you're supposed to cut it so that minimum waste होगा. If you think about it, one can argue it is also child employment. In this regard, they argue that, well, by and large, we essentially are having number of ways in which people are what? In a what do you say, malicious manner using these provisions, and genuine cases नहीं आ रहे. It has become a weapon to just trouble other people. अब जैसे ये होती है, shops होती है, in this regard they are having their own child या उनके उसका भतीजा भांजा, they essentially are working. जब भी वो नहीं काम करे तो वो बेच रहे होते हैं. समझ में नहीं है? But will you call it child employment? Actually not, but then technically yes. Technically, as per law, yes. As such, they said that these laws had to be diluted for the very simple reason that we essentially are having a lot of frivolous complaints that are coming to our notice, and it is becoming very tough for us to actually go after genuine cases. यहाँ तक समझ में? दूसरा उन्होंने क्या फैक्टर बताया? उन्होंने ये फैक्टर बताया that the question that we need to ask ourselves is, if at all we are stopping people to go to school, people to send their children to work, are we actually able to create a social security network कि उनके बच्चों को खाना मिल जाए, घर को पैसे मिल जाए? In this regard, they believe they essentially are. That is, we have ended up creating what? A very big trouble for them for the reason their children are not being employed by anyone, and they are also not able to get enough food. तो हो क्या रहा है that if at all we want to make better laws, हमने बहुत ज्यादा तेजी से बना दिया, थोड़ा स्लो करना चाहिए. किसको नहीं समझ में? Anyone not to understand the point? But this thing is something that was criticized a lot by everyone. यार ये क्या होता है, उल्टा क्यों जा रहे हैं, रुक जाओ, वो भी समझ में आता है. But why exactly you will need to do you have to dilute the laws? Anyone not to understand the point?
During this period, there was a argument that came about. अब ये समझना, because of coming of Article 21A, it has implications on Article 24. 21A जो हमने बना दिया है, that is right to education, it has implication on the new interpretation. There should be now new interpretation of Article 24. Can anyone tell me what should be the new interpretation? I hope you have to understand the point I'm trying to say. हम्म? हाँ, नहीं तो इसमें लॉजिक है, सही जाते हो, लेकिन सिक्स ठीक है, बहुत सही, perfect. Logic क्या है? If at all now you're having a child who's not getting primary education, if at all now you're having a child who's not able to go to school, that means this Article 21 is getting violated. And if at all you're having a child who actually has to go and work any kind of employment, that means that child is not going to school. In this regard, 21A now means any employment for children from 6 to 15 years prohibited. Anyone not to understand the point of trying to say? 21A nahi tha, then you have flexibility with respect to hazardous, non-hazardous. But 21A, number of that is child activists were arguing that, well, the interpretation has changed. Interpretation is for any child who's from 6 to 14, that child will need to be in school, that child will need to study, that child will essentially have to have meaningful, high quality education, and that means that child cannot go to work. That means 6 to 14 के लिए तो absolute clarity होनी चाहिए. Now child cannot be employed in any kind of employment. यहाँ तक समझ में? With all the pressure, this interpretation, there was an amendment that was done with respect to the provisions. 2016 में एक amendment आया. What exactly was the amendment? Amendment was, they essentially had said any kind of employment for children is prohibited. Any kind of employment for children is prohibited except for certain exceptions. Exceptions की एक अच्छी खासी लिस्ट है. क्या क्या exceptions है? If at all you essentially are helping your parents or your family members with respect to family business, ठीक है. If at all you essentially are working in something where it is about transfer of art, जैसे बॉल वगैरह वगैरह, तो transfer of art, that also is fine. The same they essentially said with respect to people, children who might be child artists. In this regard, what exactly are the number of hours for which a child artist can work, वो भी provision दिया गया. And it mentions none of it can be at the cost of child not going to school. School में जाना जरूरी है बच्चे का. Is it clear? Anyone not able to understand the point? उसमें ये कर दिया उन लोगों ने कि इतने घंटे से ज्यादा एक चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं काम कर सकता. नंबर ऑफ आवर्स उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए. तो आइडिया है कि अगर सोचो कि एक बच्चा है जो सुबह जाता है शूटिंग करने, रात के 8 बजे वापस आता है घर, फिर सुबह जाता है शूटिंग करने, 8 बजे आता है, उसका यूथ तो खराब हो गया ना, राइट? बस वही वो कह रहे हैं कि यूथ एंड उन्होंने कुछ रेगुलेशंस बनाए, इतने घंटे, इतने उससे ज्यादा नहीं कर सकते, और उनको स्कूल जाना जरूरी है, इतनी अटेंडेंस होनी जरूरी है, इस तरह से उन्होंने रेगुलेशंस बनाए. ना बात हो जाती है, इट इज वेरी टफ फॉर यू टू इम्प्लीमेंट इट एंड मॉनिटर इट कि वाकई इम्प्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा. पर द पॉइंट इज ये changes 2016 में because of this आया. That is all we need to keep in mind. Is it clear? Fine. हाँ. Now you have, as far as Article 24 is concerned, it applies only with respect to hazardous activity. That is even till today. But what exactly we have done? We have made a law in 2016 where we essentially have said complete prohibition of employment of children below 14 years. तो लॉ की वजह से ना चिल्ड्रन आर sort of allowed. Article 24 in its interpretation is the same. वो चीज नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज अगर होगा that can be done only through a constitutional amendment or by a judgment of Supreme Court. ये दोनों में से एक भी चीज नहीं हुई है. Only a law has been made in 2016. तो उसको अलग तरह से बोलूं तो लेट्स से आज अगर वो चेंज करना चाहे लॉ को चेंज कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. पक्का? ठीक है. मिला के सर लॉ इस तरीके से है कि आप बच्चे को काम करा सकते हो, लेकिन अब नहीं है. एजुकेशन नहीं चाहिए. हाँ, उस अब नहीं है वैसा. 2016 में जो लॉ पास हुआ उसमें बच्चे जो 14 साल से कम है उनको किसी भी एम्प्लॉयमेंट में अलाउड नहीं एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शंस. तो उन्होंने एक्सेप्शंस बना दिया. इसको ऐसे सोचो, पहले ये बास्केट होता था, अब उन्होंने कर दिया these are non hazardous and everything else is hazardous. तो जो जो चीजें हमने एक्सेप्शन से नॉन हजार्डस में डाल दिया इसमें अलाउड है,
बाकी जो इसमें नहीं है वो मान के चलो अलाउड नहीं है। बट अब जैसे बच्चों से गार्डनिंग का जॉब करा रहे हो, ये लिखा नहीं है, बट द पॉइंट इज मान के चलो अब ये नहीं, मतलब ये नॉन हजार्डस में क्योंकि नहीं है, लेकिन आप इसको अब मान के चलो इट इज नॉट अलाउड, बट इट डज नॉट फ्लो फ्रॉम आर्टिकल 24। वो जो उनका सवाल है वो फ्लो कर रहा है इस लॉ की वजह से। इज इट क्लियर? जस्ट अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी लानी पड़ेगी। ऐसे तो हम कोई भी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग लॉ बना के उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करोगे तो कुछ जो चाहे कर सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ना, उतने लोग कन्विंस तो करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कोई भी लॉ हम किसी भी फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बनाते ही तो चेंज ही हो गया। नहीं। फंडामेंटल राइट चेंज हो, देखो इसको ऐसे समझना, फंडामेंटल राइट को आप स्ट्रेंथन करने के लिए लॉज बनाओ, बहुत अच्छी बात है, पर कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है वो अलाउड नहीं है। ये बात समझ में नहीं है? फॉर एग्जाम्पल आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक लॉ है जो आर्टिकल 19 को स्ट्रेंथन कर रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा लॉ बना दो, ये कहता है कि भाई अब से कोई मूवी हम रिलीज ही नहीं होने देंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई वैसा अप्रूव नहीं करता, तो 19 को डाइल्यूट कर रहा है, हम प्री सेंसरशिप करेंगे, 19 को डाइल्यूट कर रहा है। लॉस दैट डाइल्यूट और कॉम्प्रोमाइजिंग फंडामेंटल राइट दैट कैन नॉट अकर, लॉस बाय व्हिच यू आर एबल टू स्ट्रेंथन इट, वो तो अच्छी बात है ना। यू गॉट द पॉइंट? फाइन। अब आप पूछ लो कि सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, बट दैट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी। यू गॉट द पॉइंट? स्पेशल मेजोरिटी है नहीं एटलीस्ट इस इशू के लिए। तो हटवाया गया था ना, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, वो हटवाया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। तो अमेंडमेंट करके हटा या ऐड कर सकते हो, अब ऐड कर दिया राइट टू एजुकेशन, ऐड हुआ आर्टिकल 21 ए, तो ऐड कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ओनली थिंग जो यू हैव टू वरी अबाउट इज बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं चाहिए। इसलिए जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ 21 ए ऐड करना आसान है, बट उसको हटाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो ऐड हो गया वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब आई वुड इमेजिन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो तो कोर्ट बताएगी, बट 99% है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। तो अगर उसको हटाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगी, नहीं अब नहीं हटा सकते। गॉट द पॉइंट? ठीक है, जैसे कोवैक्सीन कोविशील्ड अब लगा ली, दूसरी वही लगवानी पड़ेगी वो वाली बात है। जैसे कि कोई भी लॉ बनता है वो पास हो जाता है, एक्ट रहता है, लॉ बन जाता है, ठीक है, तो क्या उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने मर्जी से चेक करता है, कोई उसको लेके जाता है चेक करने, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से देख सकता है? हाँ। क्या कोई और ला सकता है? हाँ। क्या एक जो लॉ होता है नहीं, बात है कि ऐसे सोचो, लॉज बनते जा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस में आता है कोई लॉ जो उनको लगता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू कर ले खुद से। अगर मान लीजिए लॉ बन गया और आपको लगता है लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप भी जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो गॉट द पॉइंट? अच्छा, इसको एक और चीज, मान लीजिए आज लॉ बन गया, मान लीजिए 10 दिन बाद आप गए या कोर्ट ने खुद ले लिया, विल इट स्टॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ? नो, इट वोंट। इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन ऑफ द लॉ विल स्टॉप ओनली ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। बात समझ में नहीं है? इज इट क्लियर? अब जैसे इंटरवीन क्या, जुडिशियल काम है, तो सुओ मोटो बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन लुक इनटू केसेस इन अ सुओ मोटो मैनर विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन, खुद का फंक्शन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना में, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर किसी भी तरीके से वो हो रही है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे कोई और पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोर्ट देमसेल्फ कैन लुक इनटू अ मैटर इन अ सुओ मोटो मैनर, राइट। या फिर आप चाहो तो आप भी जाके बोल सकते हो। हाँ, मैं कह दोनों ही ऑप्शंस है, कोर्ट खुद भी देख सकता है, आप जाओ आप भी जाके देख सकते हैं, राइट। कमिंग बैक टू आर्टिकल 24, यस यू वर आस्किंग समथिंग। यस, हाँ, अंडर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट सारे वो उस पे एक्ट को देख लेंगे। सारे एक्ट को देख सकती है, बट क्या सारे एक्ट का जुडिशियल रिव्यू होता है? इट कम्स टू टू टर्म्स, नंबर वन, कोर्ट को दिख गया कोई चीज गड़बड़ है तो कोर्ट खुद ले ले, नंबर टू, किसी और को दिख गया वो आके बोल दे तो कोर्ट देख लेगा। मैं बात है, मान लीजिए 1000 कानून बने हैं, तो क्या ये सिस्टम है कि पहले कानून कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट अप्रूव करेगा तब? नहीं, ये नहीं है। प्रेसिडेंट एसेंट कर देंगी, उसके बाद कानून इंप्लीमेंट हो रहा है। In the process of implementation, now it is getting implemented, either the court can look into it or people can go to court and have it challenged.
In this regard, it is only on the directions of the court implementation of a law can be stopped. For example, Citizenship Amendment Act. ये कब से सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग चल रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को नहीं रोका है, तो जुडिशियल रिव्यू आज भी चल रहा है, but the point is इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है. You got the point, right? The same is with respect to demonetization. The day on which demonetization occurred, that day itself people had went to Supreme Court. Supreme Court accepted it. Supreme Court kept on reviewing it. Demonetization होके खत्म भी हो गया. 5-6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का आया, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, राइट? मतलब पॉइंट तो यही बोला था कोर्ट में, एक या दो जजेस ने कहा था गलत हुआ है, और जिसने एग्री किया था उसमें एक ने क्या कहा था, नाउ टू रिवर्स डीमोनेटाइजेशन इज टू पुट बैक एन ऑमलेट इनटू एन एग. जैसे एक अंडे से ऑमलेट बन गया, अब वापस नहीं कर सकते, वैसे डीमोनेटाइजेशन सही था गलत था वो तो बात की बात है, अभी वापस नहीं हो सकता, राइट? बट द पॉइंट इज जो भी था तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत बताना चाहिए था. तो एनीवेज, इज इट क्लियर? 24, राइट डाउन आर्टिकल 24. Article 24, Article 24 prohibits employment of children below age of 14 years. Article 24 prohibits employment of children below age of 14 years in hazardous employment like factories, mines, etc. In hazardous employments like factories, mines, etc. Like factories, mines, etc. Write down note. First point, Article 24 does not prohibit state. Article 24 does not prohibit state. Article 24 does not prohibit employment of children in in any non-hazardous or harmless activities. In any non-hazardous and harmless activities. Next point. Article 24 puts positive obligation on state. Article 24 puts positive obligation on state. Article 24 puts positive obligation on state to actively identify hazardous employments and enact laws to prohibit child employment in them. Enact laws to prohibit child employment in them. In such activities, in them. Write down next point. In 1983, third point. In 1983, Supreme Court held Article 24 must always be read with. Article 24 must always be read with. Article 39E
and Article 39F. For complete interpretation. Supreme, हाँ, you have a doubt or हाँ पूछो. Of court. So you're still missing the point. The idea is Supreme Court has given further clarity with respect to Article 24. Now, let's say if we are legislature, we have to make sure that we are doing things within that clarity. So we essentially can make things which essentially can make laws better, nothing better, but we cannot create laws which goes against this interpretation of the court. Yes. You got the point. इसको ऐसे समझना. Let's say, for example, right now children are allowed to work in TV serials. In this regard, it is considered to be an exception. In this regard, let's say you and me believe, no, this is something which is hazardous employment. We can go to Supreme Court because of this judgment, and we have to argue and convince the court. So with respect to Article 39E and 39F, we have arguments to believe it violates Article 24. If court gets convinced, even in TV serial, children will not be allowed. You got the point? Is it clear? Write down. Article 39E, 39F. ये लिख दिया ना? हाँ? ठीक है, एक ही वो ये लिख दिया ना कि 39E and 39F must be read together with this. Next sentence within the same point. Write down. Article 39E says. Article 39E says tender age. Tender मतलब नाजुक age. Tender age of children should not be abused. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है. तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका. साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें. Unacademy IS, India's best learning platform. Thank you. Tender age of children should not be abused, and children should not be forced to take up employment which is unsuitable for their age. Children should not be forced to take up employment which is not suitable for their age due to economic compulsion. Write down Article 39F. Article 39F. It says state must create opportunities which allows children to grow in a healthy manner
comma, under conditions of freedom and dignity, to grow in a healthy manner, under conditions of freedom and dignity, and and their childhood their childhood and youth is protected from exploitation is protected from exploitation is protected from exploitation. Next point. So this Supreme Court has identified construction work. Supreme Court has identified construction work to be a hazardous employment. To be a hazardous employment. ठीक है, अब लिखना सबमिटिंग आर्टिकल 24 in light of Article 21A. Article 24 in light of Article 21A. ठीक है, write down. Several experts argue. Several experts argue. Several experts argue. Enactment of right to education under Article 21A. Enactment of right to education under Article 21A has implications on Article 24. Enactment of right to education under Article 21A has implications on Article 24. The right interpretation of Article 24 should now be the right interpretation of Article 24 should now be the right interpretation of Article 24 should now be any employment for a child under the age of 14 years for a child under the age of 14 years must be prohibited as must be prohibited as a child engaged in any type of employment. A child engaged in any type of employment is not able to enjoy his/her rights under Article 21A. A child engaged in any type of employment is not able to enjoy any type of is not able to enjoy his/her Article 21A. His/her Article 21A.